everyone, welcome to the Needle Magic. In today's tutorial we'll be making this bottle cover. आज हम ये bottle cover बनाना सीखेंगे. बहुत easy है, बहुत जल्दी बन जाएगा. So let's get started. We have to start by making a magic circle. सबसे पहले हम एक magic circle बनाएंगे. So we'll wrap the yarn on our two fingers. Put the needle, put the hook under the first and pull the second loop. Okay, and twist the needle so that we have this loop here on the needle. Then slide it off your fingers. Chain 1 to secure, and your magic circle is ready. Now we'll chain 4. 1, 2, 3, 4. अब हमने 4 चेन्स बनाई हैं, लेकिन हम जो थर्ड वाली चेन है उसमें हम एक मार्कर लगा देंगे. So we'll put a marker on the third chain here. If you don't have a marker, you can put a piece of yarn over here. And this chain 3 will be counted as our first double crochet stitch, and the chain 1 will be the space. तो ये जो 3 chains है, ये double crochet stitch हमारी first वाली इसकी तरह count होगा. Now we'll make a double crochet stitch in the magic circle. Then chain 1, one more double crochet stitch in the magic circle, chain 1, one more double crochet stitch in the magic circle, chain 1, and we must have a total of 8 double crochet stitches here in the magic circle. And the chain 3 will count as a first double crochet stitch. 2, 3, 4. So we have to make 4 more. हमें total 8 double crochet stitches चाहिए, और बीच में हमने chain 1 करना है, chain 1 spaces. तो chain 1 double crochet stitch. This is the 6th double crochet stitch. Chain 1 7th double crochet stitch. Chain 1 8th double crochet stitch. Chain 1, and now we have to join. So we'll pull the thread, pull the yarn, tighten the magic loop, and now where we put our stitch marker, that chain we have to do a slip stitch. So जहाँ पे हमने मार्कर लगाया था स्टार्टिंग में थर्ड चेन पे, उस वाली चेन से हम स्लिप स्टिच करेंगे. Now we'll slip stitch in the chain 1 space just next to the stitch, and now we'll add a stitch marker here in this chain 1 space. इस chain 1 space में हम stitch marker को हम add कर लेंगे, ताकि हमें पता चलेगा कि यहाँ पे हमारा round, actually not in this, we'll put it on the chain 3. that will be much easier. तो हम chain 3 पे लगाएंगे. So now we'll chain 3, 1, 2, 3, and on the third chain again we'll add a stitch marker. Now chain 1 more, एक और chain बनाएंगे हम, and we'll do 1 double crochet stitch in the same space. इसी same space में हम एक double crochet stitch बनाएंगे. So we have 2 double crochet stitches because this chain 3 will be counted as a first double crochet stitch and a chain 1 in between. So this is a V stitch. Now we'll chain 1, and in the next chain 1 space again we have to make 2 double crochet stitches and a chain 1 in the middle. So यहाँ पे हम एक double crochet stitch करेंगे, chain 1, another double crochet stitch in the same space, chain 1. Now in the next space, double crochet stitch, chain 1, another double crochet stitch in the same space, chain 1. Then in the next space again, इसी तरीके से हम हर एक स्पेस में करते जाएंगे. डबल क्रोशे स्टिच करेंगे, चेन 1, और एक और डबल क्रोशे स्टिच उसी सेम स्पेस में, चेन 1. So we are basically doing a chain 1 after every double crochet stitch, but we are doing 2 double crochet stitches in each chain 1 space. Chain 1, one more double crochet stitch in the same space, and chain 1. Then again double crochet stitch in the next chain 1 space, chain 1, one more double crochet stitch in the same space, and chain 1. Then here double crochet stitch, chain 1, one more double crochet stitch in the same space, chain 1. Now this is the last space here. We'll make a double crochet stitch, chain 1,
one more double crochet stitch, chain 1, and now where we put our marker, that chain we'll do a slip stitch and join. तो इस जहाँ पे हमने मार्कर लगाया था उस वाली थर्ड चेन पे हम इसको स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर देंगे. सो विल स्लिप स्टिच एंड ज्वाइन. दिस कंप्लीट्स आवर round 2. And now for me this size is perfect because I'm using a small bottle and the base, this is fine for this. But if you're using a bigger bottle, you want a cover for a bigger bottle, you can just repeat the round 2. What you have to do is you have to do this 2 double crochet stitch and chain 1 pattern in each space, and then your circle will be bigger, and then you can start making the length of the cover. तो आप इसी तरीके से रो 2 को रिपीट कर सकते हैं अगर आपको बड़ा बेस चाहिए. सो उसमें क्या करना है, आपने हर एक स्पेस में 2 डबल क्रोशे स्टिच करते जाना है और बीच बीच में हर एक डबल क्रोशे स्टिच के बीच में चेन 1 करना है. तो मतलब बेसिकली आपको ये रो 2 को ही रिपीट करना है एक और बार, और फिर आपका ये बॉटम बड़ा हो जाएगा. सो इफ़ यू वांट अ बिगर बेस, बिगर बॉटम, यू कैन जस्ट रिपीट द round 2. For me this is fine, so I'll just stop here and now I'll start the length of the cover. So for that, first I'm going to do a slip stitch in the space here. इस space में हम slip stitch कर लेंगे क्योंकि हम यहाँ से start करेंगे. So now what I'm going to do is I'll be chaining 5. सबसे पहले मैं chain 5 करूँगी, 1 2 3 4 5, and now I'll do a single crochet stitch. I'll leave the first space and go into the second space and do a single crochet stitch. तो एक space को छोड़ के second वाली space में हम एक single crochet stitch करेंगे. And now I'll be putting my marker in this chain 5 space so that I'll know that this is the first chain 5 that I did. तो ये जो first chain 5 है मैं यहाँ पे marker लगा रही हूँ ताकि हमें को पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे round start किया था. Now again chain 5, 1 2 3 4 5, skip the first space here and go into the second space and make a single crochet stitch. एक स्पेस को हमने स्किप करके सेकंड स्पेस में सिंगल क्रोशे स्टिच किया है. इसी तरीके हम ये राउंड को कंप्लीट करेंगे. चेन 5, skip the first space and go into the second space and make a single crochet stitch. Then again chain 5, skip the first space, go into the second one and make a single crochet stitch. इसी तरीके से हम करते जाएंगे. एक स्पेस को स्किप करके सेकेंड वाली में सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे और चेन 5 बनाते जाएंगे ऐसे. So skip the first and go into the second space and make a single crochet stitch. Then again chain 5, 3 4 5, skip the first space, go into the second space and make a single crochet stitch. Then again chain 5, skip the first space, go into the second space, make a single crochet stitch. 1 2 3 4 5, chain 5, skip the first space, and now we are not going to go into the second space because here you can see there's a marker. We have reached our marker here from where we started our chains. So now we don't have to chain 5, we have to chain 3. Now we'll chain 3 and we'll do a double crochet stitch in the chain 5 where we have a marker. तो जब हम लास्ट के स्पेस में आ जाएंगे, जब हमारा एक स्किप करने के बाद नेक्स्ट से फर्स्ट वाला चेन 5 निकल रहा है जहाँ पे हमारा मार्कर है, तब हमने चेन 3 करना है. एंड चेन 3 करने के बाद हम इस चेन 5 में डबल क्रोशे स्टिच करेंगे. सो आफ्टर डूइंग द चेन 3 वील डू अ डबल क्रोशे स्टिच इन द चेन 5 स्पेस. ओके, एंड नाउ वील पुट अ मार्कर हियर. हम अपना मार्कर यहाँ लगा लेंगे अब इस चेन 5 में, मतलब वो चेन 3 और डबल क्रोशे स्टिच से जो हमने चेन 5 बनाया उसमें. नाउ वी हैव पुट अ मार्कर हियर. नाउ वील चेन 5, 1 2 3 4 5, and we'll go into the chain 5 space here, not in which you have made the double crochet stitch. The next one we'll make a single crochet stitch here. Then again chain 5, 3 4 5 and single crochet stitch in the next chain 5 space. इस तरीके से हम हर chain 5 space में single crochet stitch करेंगे एक एक. 1 2 3 4 5 chain 5 and single crochet stitch in the next chain 5 space.
1 2 3 4 5 single crochet stitch in the next chain 5 space. 1 2 3 4 5 single crochet stitch in the next chain 5 space. So we'll complete this 1 2 3 4 5 single crochet stitch in the next chain 5 space. And now you can see we have reached where our marker is. अब हम मार्कर वाली जगह पे आ गए हैं. So we'll chain 3 1 2 3 and we'll do a double crochet stitch in the chain 5 space where we have the marker. तो जहाँ पे हमारा मार्कर होगा वहाँ पे उससे पहले हमने chain 3 करके double crochet stitch करना है. And now we'll put our marker here. So we'll remove it from here and add it here. Okay, and now you have to keep repeating this this round until and unless you get your desired length. तो आपको इसी रो को बार बार रिपीट करते जाना है जब तक आप उस लेंथ पे नहीं पहुंच जाते जितना लॉन्ग आपको ये बॉटल कवर चाहिए. So I'll be completing it. I'll be repeating this row, this round until I get the desired length that I want, and then I'll show you what to do next and how to make the handle of this. And so you also keep doing this round again and again. I'm so sorry. Keep doing this round again and again until you get your desired length, and then I'll meet you guys back here. देखिए मैंने इतना लंबा बना लिया है. I've made it the length I want it to be. So once you reach the desired length, so here I've reached the beginning of the round, and now usually what we do, we chain 3 and make a double crochet stitch here, and then we start the next round. But now since we have reached the desired length, what we'll do is we'll chain 5. जब हम वैसे कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, जब हम राउंड एंड कर रहे थे, हम चेन 3 करके डबल क्रोशे स्टिच करके हम अपना राउंड हर राउंड हमने एंड किया है. लेकिन अब जबकि हम अपने डिजायर्ड लेंथ पे पहुंच गए हैं, अब हम चेन 5 करेंगे. विल चेन 5 1 2 3 4 5 and then we'll do a single crochet stitch here. We'll remove the stitch marker. We'll put the stitch marker on the single crochet stitch that we did. ये जो stitch हमने अभी single crochet stitch की है, हम अपना stitch marker उस पे लगाएंगे. And now we have to make 5 single crochet stitches in each of these chain 5 spaces. अभी हर chain 5 space में हमने 5 single crochet stitch बनाने हैं. हमने एक बना लिया है. We have already made one. So we'll make 4 more. 4 और बनाएंगे. 2 3 4 and 5. So we have a total of 5 single crochet stitches here. Then in the next chain 5 space again we'll make 5 single crochet stitches. Next chain 5 space में फिर से हम 5 single crochet stitches बनाएंगे. 3 4 and 5. Then again in the next chain 5 space we'll make 5 single crochet stitches. ऐसे ही हर एक chain 5 space में हमने 5 single crochet stitch बनाने हैं. We have to make 5 single crochet stitches in each of these chain 5 spaces. And this is the way we have to complete the round. And when we reach here where our stitch marker is, we have to slip stitch on the stitch in which we have added the stitch marker. So here I have reached the last chain 5 space before the stitch marker. मैंने last chain 5 space पे पहुंच गई हूँ. तो यहाँ पर भी 5 single crochet stitches बनाएंगे. So we'll make 5 single crochet stitches here. 2 3 4 and 5. Now we have to slip stitch onto the first single crochet stitch that we did. So we'll remove the stitch marker. हम stitch marker को remove कर देंगे यहाँ से. And we'll slip stitch करेंगे. And then we'll chain 1 and we'll begin another round of single crochet stitches. तो हमने chain 1 की है. Now we have to do 1 single crochet stitch in each of these stitches here. तो हर एक stitch में एक single crochet stitch हम करते जाएंगे. So we'll just keep doing 1 single crochet stitch in each of these following stitches and complete our round.
तो इसी तरीके से हम अपना राउंड कंप्लीट कर लेंगे। एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच हर एक स्टिच में करते जाना है। देखिए आई हैव कंप्लीटेड राउंड 2 ऑफ सिंगल क्रोशे स्टिचेस। मैंने राउंड 2 भी कंप्लीट कर लिया है। एंड नाउ वील स्लिप स्टिच ऑन टू द फर्स्ट सिंगल क्रोशे स्टिच दैट वी डिड ऑफ दिस राउंड, नॉट विद द चेन 1। तो हमने यहाँ पे चेन 1 बना के फिर सिंगल क्रोशे स्टिचेस स्टार्ट करी थी, जो सेकेंड राउंड सिंगल क्रोशे स्टिच का था। तो हम चेन 1 से नहीं स्लिप स्टिच करेंगे, हम जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे स्टिच थी उससे हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर देंगे। सो वील ज्वाइन विद द फर्स्ट single crochet stitch that we did. So this is the way we have completed our bottle cover. Now we just need to make the handle. अब हमको handle बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे? So you can see 3 stitches here and 3 stitches of this side. We have to make the handle and then join from the other side. So we'll start making it from this side. तो हम यहाँ पे पहले 3 स्टिचेस में सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे। विल डू सिंगल क्रोशे स्टिच इन द नेक्स्ट 3 स्टिचेस। चेन 1, टर्न योर वर्क, चेन 1 करके अपना वर्क टर्न करेंगे एंड देन 3 स्टिचेस, 3 सिंगल क्रोशे स्टिचेस इन द 3 स्टिचेस दैट वी डिड। देन अगेन चेन 1, टर्न योर वर्क एंड 3 सिंगल क्रोशे स्टिचेस इन द 3 स्टिचेस। इसी तरीके से हमने इन्हीं 3 स्टिचेस को लॉन्ग बनाते जाना है, एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच तीनों स्टिच में करते करते। देन अगेन चेन 1, टर्न योर वर्क, मेक 3 सिंगल क्रोशे स्टिचेस इन दीज 3 स्टिचेस। इन्हीं 3 स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे। फिर से चेन 1 करके टर्न करेंगे अपना वर्क। चेन 1, टर्न योर वर्क, again work 3 single crochet stitches in these 3 stitches and you have to make this as long as you want your handle to be. तो जितना लॉन्ग आपको चाहिए आप उतना लॉन्ग इसको बनाते जाइए। इसी तरीके से इस पैटर्न को कंटिन्यू करके जितना लॉन्ग आपको चाहिए। और अगर आपको ये चौड़ा चाहिए तो आप ज़्यादा स्टिचेस में भी कर सकते हैं। इफ़ यू वांट इट टू बी वाइडर यू कैन ऑल्सो यूज़ लाइक यू कैन डू सिंगल क्रोशे स्टिचेस इन 5 stitches or 4 stitches, so it will be a wider strap. But I feel that 3 single crochet stitches will be more than enough. So I'll continue doing this, and once I reach the desired length of the strap then I'll show you how to join it to the other side. तो एक बारी मेरा बन जाएगा उतना लॉन्ग जितना मुझे चाहिए तो मैं आपको बताऊंगी इसे ज्वाइन कैसे करना है। तो आप इसी तरीके से कंटिन्यू करते जाइए। आई हैव मेड द स्ट्रैप एज लॉन्ग एज आई वॉन्टेड। मैंने स्ट्रैप जितना लॉन्ग मुझे चाहिए था मैंने उतना लॉन्ग बना लिया। आप जितना लॉन्ग चाहें उतना लॉन्ग बना सकते हैं। और एक बार आपको जितना लॉन्ग चाहिए उतना आपने बना लिया है, उसके बाद वॉट यू हैव टू डू इज़, उसके बाद आपने क्या करना है, सी वंस यू हैव मेड द डिज़ायर्ड लेंथ ऑफ योर स्ट्रैप यू हैव टू होल्ड इट equally like this, like you can see chain 5 group, chain 5 group, chain 5 group, and see the 3 stitches over here just opposite from where we started. जहाँ से हमने स्टार्ट किया था बिल्कुल उसके ऑपोजिट जो ये 3 स्टिचेस हैं हम उन 3 स्टिचेस में इसको अटैच कर देंगे। वील अटैच दिस इन दीज 3 स्टिचेस। सो फॉर दैट 1 2 3, so I'll take in the loop from here like this and join it by doing a slip stitch. तो मैं इसी सेम स्टिच में जाके स्लिप स्टिच करके इसे ज्वाइन कर दूंगी। फिर से we'll go in the stitch of the strap and in the stitch of the cover and do a slip stitch. Then again the third stitch here we'll go in the stitch of the strap and in the stitch of the cover and do a slip stitch. तो slip stitch करके हमने इसे join कर लिया है। And now chain 1 and fasten off. chain 1 करके हम fasten off कर लेंगे। And now
we'll take a tapestry needle and weave in this yarn end. हम tapestry needle लेके इस yarn end को weave in कर देंगे. And make sure when you're attaching the strap on the other side, make sure that you have, you know, it's not untangled, it's straight. कभी कभी क्या होता है, ये मुड़ जाता है जब हम दूसरी साइड पे स्टिच कर रहे होते हैं और हमें पता नहीं चलता. तो ये चीज़ का ध्यान रखना आपने कि ये एकदम स्ट्रेट हो, ये मुड़े नहीं. So make sure that it's straight and not untangled, and then you can just weave in these yarn ends and your bottle cover is ready. So you have to just go in couple of stitches so that it's secured enough. थोड़ी सी stitches के बीच में आपने जाना है. I like to go back and forth. That's it, and we can just cut the extra yarn. एक्स्ट्रा यार्न को हम कट कर देंगे और एक यार्न एंड अंदर की तरफ भी होगी. वन यार्न एंड विल बी इनसाइड हियर, सो यू कैन जस्ट रिमूव इट लाइक दिस. यू कैन जस्ट वीव इन विद द टेपेस्ट्री नीडल. टेपेस्ट्री नीडल की मदद से हम इसको भी वीव इन कर देंगे. सो वील वीव इन दिस यार्न एंड एज वेल. And then we'll cut the extra yarn. And that's it. Your bottle cover is ready. I hope you liked the tutorial. Thank you so much for watching. I'll put my bottle and show how it looks. So you can make it of any size according to your bottle. This is how my cover looks. I hope you liked the tutorial. Thank you so much for watching. Be happy, keep crocheting, stay safe. Bye bye.